Hello, dear friends. I hope you are enjoying your Diwali with your books. Well, this is a very common feature with the chartered accountancy students. I've been through this phase a couple of times, so I really know, how it feels that people are celebrating this festival all the way, and you are celebrating with your books. But doesn't matter. It's really worth spending such kind of Diwalis or maybe making such sacrifices, and they'll surely pay you off. I definitely can assure that. Now, this lecture I'm recording only for the revision of indirect taxes. Now, my dear friends, I've divided this part of revision into three distinct parts. First one, we'll be revising the Central Excise Act, thereby the Customs Act. Thereafter, we'll be understanding the provisions of service tax, and then VAT हम discuss करेंगे. CST हालांकि मैं फिलहाल इस वीडियो में CST को include नहीं करना चाहता हूँ because the provisions are very much similar, which will be getting repeated somewhere in the VAT in itself. So CST I would not be really keen to revise over here, as even the portion of it is really very small. So let's focus on the major parts of it, the other chapters. So starting with the central excise laws. Now under the indirect taxes, we know that first of all, when we say there is an indirect tax, or when we say there is a tax in first place, there is always one thing necessary need to be there, that is a taxable event. मतलब कोई भी टैक्स अट्रैक्ट होने के लिए what is that specific thing that needs to happen is that there is this happening of a taxable event that needs to take place. Taxable event, when it happens, we say that the tax gets attracted. So for the purpose of tax getting attracted, we need to have this taxable event being occurred. Now when we talk from the perspective of indirect taxes, let us go act wise. So first of all, we are going to discuss the Central Excise Act 1944. What our syllabus at Ipcc is having in Central Excise, the basics of Central Excise Act, thereafter some rules regarding the classification of goods, there are certain aspects regarding the valuation, and you have the numerical problems regarding the valuation, and a couple of provisions under the SSI, small scale industries. So these are the only things or provisions which are covered for your syllabus level at the Ipcc. Now the Central Excise Act 1944, for that matter, what is a taxable event for the purpose of Central Excise levy? It is the activity of manufacture. Manufacture किस चीज का? तो manufacture of excisable goods. Now in the constitution entry that has been given over there, so what does the constitutional entry say? That the duties of excise will be levied on all the goods manufactured in India except for alcoholic liquor for human consumption, opium, narcotics and Indian hemp, but including medicinal and toiletries which are containing alcohol. Now based on the constitutional entries, we could only understand that okay, there is a duty called as excise duty. किस चीज पे लगती है? तो it is on the manufacture of what things? So manufacture of excisable goods, and the duty which is levied, that is not applicable on the goods such as alcoholic liquor for human consumption, opium, narcotics and Indian hemp. ये सब चीजों के ऊपर you have the state excise duty in case of alcohol, and where there are certain products which contain alcohol as one of its content. So let's say when we talk about a disinfectant or a phenyl or a cleaner, in that you have alcohol as a content in it, still that will be covered under the central excise. मतलब अगर product तुम्हारा alcoholic liquor for human consumption है, then that will not come under central excise, that goes under the state excise purview. But तुम्हारा कोई product है जिसमें alcohol is just one of the contents in it, then we'll say definitely that there is this central excise act applicable, right? Now the charging section of this law, what does the charging section say? Section 3, which is the charging section, has been given a definition as: there shall be levied and collected in the manner as may be prescribed a duty of excise to be called as senvat on all excisable goods which are manufactured in India apart from SEZ, and the duty shall be collected in the rates which are set forth in first schedule to the Central Excise Tariff Act 1985. Now my dear friends, this definition is slightly elongated. हम लोग को इस definition के कुछ 7 important words है, उसी के ऊपर गौर करना है, because your entire basics of excise goes in these 7 words. So let's start now. There shall be levied. So Central Excise का Section 3, Central Excise Act का Section 3 क्या बोलता है? That there shall be levied, excise duty charge होनी चाहिए, and collected in the manner as may be prescribed. मतलब excise duty का जो collection है, collection करने का जो तरीका है, that is as may be prescribed. Prescribed का मतलब is as per some rules and regulations. So now you must be knowing that rule 4 of Central Excise rules says that duty is payable on removal.
सो यहाँ पे कैसा होता है, देखो चार्जिंग सेक्शन 3 वो क्या बोलता है, दैट देयर शैल बी लेविड, मतलब एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए। एंड कलेक्ट करने का जो तरीका है वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट नहीं बताता है, बल्कि सेंट्रल एक्साइज रूल्स का रूल 4 आपको बताता है ड्यूटीज पेबल एट द टाइम ऑफ रिमूवल, राइट। सो दे शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कलेक्शन करने का तरीका ये प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स एंड रेगुलेशन में। A duty of excise to be called as CENVAT, centralized value added tax, which is levied on all excisable goods manufactured in India. Now when I say goods for the purpose of excise, excise में goods की definition नहीं है। goods को क्या बोला जाता है, that goods do not have a definition under central excise. You have seen the definition of goods in sales tax, you have seen the definition of goods under the constitutional entries, but in excise goods are recognized only by two characteristics. After the process, whatever product you have obtained, if that is movable and that is marketable, then we'll say that they are goods for the purpose of excise. मतलब for anything to become goods, after the process whatever things have come into existence, अगर वो चीजें movable है, अगर वो चीजें marketable है, that is movable as well as marketable, then we'll say they are goods. And अगर वो goods excisable है, then we'll say that they are excisable goods which are being manufactured. Now movability and marketability के एस्पेक्ट के लिए जो क्लासेस में डिस्कस किए जाते हैं केसेस, सो मूवेबिलिटी के लिए एक ही चीज हम लोग फाइनली कंक्लूडिंग क्या ध्यान में रखते हैं, दैट इज एनीथिंग हैविंग एन एबिलिटी ऑफ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इट्स करंट प्लेस, दैट इज जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के बाद एग्जिस्टेंस में आए हैं उसको उनकी ओरिजिनल जगह से डिस्प्लेस करने का, इज इट पॉसिबल टू मूव देम एट द सब्सिक्वेंट रिमूवल, इफ यस देन दे आर मूवेबल. If they are not movable, then we'll say that they are non-movable goods, and anything which is non-movable will not come under the purview of goods for the purpose of excise. So movability का एक आधा एग्जाम्पल, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे एक आधा मशीन है, मे बी उसका साइज बड़ा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका लेंथ ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्साइज के लिए मूवेबल नहीं है, वो वेरी मच मूवेबल होता है. मूवेबल डज नॉट नेसेसरली मीन कि ह्यूमन एफर्ट से मूवेबल. मूवेबल मतलब कि वो गुड्स डिसमेंटल किए बिना अपनी जगह से अगर रिमूव करे जा सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे दे आर मूवेबल. But let's say that something like, so building, when you construct a building, that is also a thing which has come into existence after a certain process, but that has become like a immovable property now, so it is not possible to move a building, so that is, it is an immovable property, so वो excise के लिए goods नहीं बनेगा, right? Then marketable के बारे में हम लोग ने cases देखे रहेंगे. So marketability के बारे में what you need to remember, if anything is having a ability of being bought or sold for a consideration, that product will be called as marketable. मतलब एक्चुअल सेल होना जरूरी नहीं है. तुम्हारे गुड्स की अगर इतनी हैसियत है कि वो बेचे जा सकते हैं फॉर अ कंसिडरेशन, देन आल्सो दे विल बी कॉल्ड एज मार्केटेबल. अगेन लेट मी रीइटरेट दैट एक्चुअल सेल इज नॉट नेसेसरी, एक्चुअल सेल इज नॉट मैंडेटरी, ओनली द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग बॉट और सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन इज व्हाट इज मोर नेसेसरी टू कॉल द गुड्स एज मार्केटेबल. सो गुड्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी मूवेबल एज वेल एज मार्केटेबल, करेक्ट. Now when we move towards excisable goods, so excisable goods के बारे में क्या बोला है, goods which have been mentioned in the Central Excise Tariff Act and liable to duty of excise. So goods mentioned in the SETA means excisable. इसका मतलब जो goods SETA में mentioned नहीं है वो क्या बन जाते हैं, non excisable. Now excisable goods में you have further categories, you have dutiable and non dutiable. Dutiable मतलब something which carries a rate of duty. Non dutiable में you have exempted goods, nil rated goods and goods which are blank rated. Now ये exempted goods मतलब क्या, कि ऐसे goods जिसका टैरिफ रेट तो भले एग्जिस्ट करता है बट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एग्जम्पशन दे दिया है अपने को, सो दैट मींस देयर इज अ टैरिफ रेट ऑफ ड्यूटी बट देयर इज अ 100% एग्जम्पशन व्हिच इज एप्लीकेबल एंड देयरफॉर द इफेक्टिव और द ऑपरेटिव रेट ऑफ ड्यूटी कम्स टू 0%. ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं एग्जम्प्टेड गुड्स. Nil rated goods मतलब क्या, nil is also a rate of duty. So when there is a nil written in front of the tariff, so जैसे tariff में अगर आप देखोगे तो under the category of, let's say that in any of the sections or chapters you open up and you will see that there are certain goods जिनके सामने nil 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 ऐसा लिखा हुआ है. Now nil is also a rate of duty, remember this. So nil duty हम लोग increase कर सकते हैं, exempted goods का exemption कभी भी withdraw कर सकते हैं, बट नॉन एक्साइजेबल गुड्स को अगर मुझे एक्साइजेबल बनाना है देन बजट नोटिफिकेशन के टाइम पे आई विल बी एबल टू मेक इट, दैट इज अ न्यू लेवी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ बजट्स बट एग्जम्पशंस कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट इज द डिफरेंस.
सो एक्साइजेबल में क्या आता है, एक्साइजेबल मतलब गुड्स विच आर मेंशन्ड इन द सेटा, गुड्स नॉट मेंशन्ड इन द सेटा आर नॉन एक्साइजेबल, गुड्स मेंशन मतलब जो एक्साइजेबल है उसमें दो कैटेगरी, ड्यूटेबल एंड नॉन ड्यूटेबल. Dutiable goods matlab which are carrying any rate of duty, 3%, 4%, 5%, anything for that matter. Non-dutiable mein you have exempted, nil rated and blank rated goods, right? Now, so excisable goods bhi ho gaya. Now, India ka meaning kya hai? The entire landmass of India plus a distance up to 12 nautical miles in water, that will be called as territorial waters of India. TWI stands for territorial waters of India. ये 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है ना. प्रोविजंस ऑफ एक्साइज आर आल्सो गोइंग टू हैव एन एक्सटेंसिव इंपैक्ट अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इन वाटर व्हिच इज कॉल्ड एज अ EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो वहां पे जो EEZ में होने वाली कोई भी एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती है तो उसके ऊपर भी सेंट्रल एक्साइज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैन्युफैक्चर. नाउ एज यू मस्ट हैव नोन बाय नाउ कि मैन्युफैक्चर का जो डेफिनेशन है, एनी प्रोसेस इनसिडेंटल एंड एंसिलरी, वो वाला डेफिनेशन. So the definition given under section 2 subsection F में, that definition is not pretty much used because what happens is that insofar as the schedule 1 goods are concerned, what we see the decision that had come up in the case of Union of India versus Delhi Cloth Mills. वहाँ पे जो conclusions Honorable Supreme Court ने दिया था उसमें हम लोग ने क्या देखा था, that manufacture implies a change but every change does not amount to manufacture. So something more than mere a change has to be undergone, that is a new product comes into existence having a different name, character and usage. मतलब तुम्हारा ये जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर है, ये जो भी प्रोसेस आप करते हो, मे बी इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड और इट इज मशीन ओरिएंटेड, ये प्रोसेस करने के बाद जो नई चीजें इमर्ज होती है दे शुड बी हैविंग सम न्यू नेम, कैरेक्टर एंड यूसेज, तब जाके हम लोग बोलेंगे दैट मैन्युफैक्चर हैज टेकन प्लेस. नाउ यहाँ पे नेम टेस्ट डज नॉट रियली स्टैंड वेरी मच गुड, but character and usage definitely counts a lot, so we'll say that over there is a manufacture. Now जब हम लोग बोलते हैं कि शेड्यूल 3 रिलेटेड गुड्स, शेड्यूल 3 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट में दिए हुए जो गुड्स है उनके बारे में उन्होंने बोला है दैट एनी प्रोसेस अमाउंटिंग टू पैकिंग और रीपैकिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग और डिक्लेरेशन और अल्टरेशन ऑफ रिटेल सेल्स प्राइस और कैरिंग आउट एनी प्रोसेस टू मेक द गुड्स मार्केटेबल फॉर द कंजम्पशन. मतलब ये जो शेड्यूल 3 गुड्स है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के शेड्यूल 3 गुड्स है, इनके बारे में अगर कोई भी ऐसा वाला प्रोसेस हो जाता है, पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, then even that will be considered as a manufacture, that will be assumed as a manufacture in relation to these goods which have been mentioned. ये वाली प्रोविजन ज्यादा करके उन गुड्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं जो MRP बेस्ड वैल्यूएशन में कवर होते हैं. ऐसे टाइप के गुड्स के लिए दिस प्रोविजन ऑफ पैकिंग, रीपैकिंग एंड ऑल अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, राइट. So now then when we say that India में SEZ नहीं आता है, that is SEZ में मैन्युफैक्चर अगर होता है तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है. So because SEZ is governed by the provisions of SEZ Act and therefore उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है. So अपना जो मेन डेफिनेशन था चार्जिंग सेक्शन का, उसमें से अभी we have done excisable goods, we know manufacture, we know India, we know the meaning of levy and then collection in the manner as may be prescribed. And then they say that the rates of duty are mentioned in SETA. So whatever is the excise duty rate that is applicable for your goods, that will be mentioned in the SETA. Okay, friends, now of course this is a rapid revision, so I'll be being a bit in a hurried manner, whereby I'll ensure that you are going through the entire concepts properly. It is only that we'll be keeping time as a constraint because it's your paper day after tomorrow. So I do not wish, I mean tomorrow you are having a rest day and day after tomorrow you'll be watching this video. So again, so I want that you should revise it in a very crisp manner. इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ये वीडियो को आगे बढ़ाते जाऊंगा. Now the next chapter was classification of excisable goods. Now in the first chapter particularly ये सब जो 7 important words है उसको ही ध्यान में रख के उसके बारे में पढ़ना जरूर करो. Try to go through the modules, practice manuals also कि जिसमें आपको कुछ ऐसे examples मिलेंगे जो हम लोग ने अभी फिलहाल डिस्कस किए थे पॉइंट्स उसके ऊपर के, and try to solve some questions which are being asked over there, right? Now so far as the chapter classification goes, classification क्यों करते हैं? So because the SETA is a collection of goods which is having multiple number of goods with multiple rates of duties and all. So we don't really know that whether what exact duty is going to be applicable. So classification helps us to ascertain the appropriate rate of duty. Now the situation is that excise में classification and valuation ये दोनों जिम्मेदारियां assessee के ऊपर ही होती है because there is a self assessment mechanism under central excise. So we need to have this thing very clear in our mind. So classification regarding हम लोग सिर्फ क्या पढ़े थे, that classification कैसे किया जाता है. So our tariff is being made
ऑन द बेसिस ऑफ ITC HSN, मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हमने ये टैरिफ अपना जो है वो डिजाइन किया है. Now whatever understanding of the tariff is, if you are not able to understand the tariff या फिर the classification of the goods is not possible for you, then you may go through the rules which have been given as general interpretative rules. Now this general interpretative rules which have been given in the classification, they are only for what purpose, कि कौन से goods का classification कहाँ पे होगा if there is some sort of conflict which is existing. Now when I say that there is this concept of classification over here, उसमें जो जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स है वो सिर्फ तुमको एक जस्ट लिस्ट के तौर पर दिए हुए हैं. देयर इज नो एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ इट व्हिच विल बी रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ. सो यू मे स्टिल जस्ट गो थ्रू दोस रूल्स वंस, मे बी इन 5-10 मिनट्स उतना आप देख के खत्म कर दो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हेन वी रेफर टू द चैप्टर वैल्यूएशन, नाउ वैल्यूएशन ब्रिंग्स इन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वैल्यूएशन मतलब क्या, तो गुड्स का वैल्यू जो डिटरमाइन करना है, बिकॉज ड्यूटी इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, वन इज असेसेबल वैल्यू एंड अनदर इज रेट ऑफ ड्यूटी. So valuation कैसे किया जाता है, assessable value multiplied by the rate of duty, that is how you will get the valuation of excisable goods. But that is the way in which beg your pardon, you're going to get the duty of excise, but the valuation has to be done in what particular sense. Now valuation करने के तरीके अलग अलग है. You may have a compounded levy scheme, मतलब जो एक ad hoc basis पे आपको valuation करके tax बताया जाएगा. Which then you also have a duty based on annual production capacity, जैसे गुड का and all industry में use होता है. Then you have specific duties. Specific duties मतलब duties which are regarding the parameters of the product, so just such as length or volume etc. So in case of cigarettes you have this specific duties applicable. Now the more important ones which are dealt in with your syllabus are the ones which are covered under the MRP based valuation and the goods which are covered under the transaction value. Now this transaction value, as it has been defined, transaction value is defined as what? The price actually paid or payable by the buyer to the seller for delivery of the goods at the time and place of removal. So ये जो transaction value है हम लोग को देखना है, ये transaction value के ऊपर अपना maximum goods cost होता है and उसकी basis पे value determine करके हम लोग excise duty pay करते हैं. Now valuation में ये जो transaction value का situation है, transaction value has to be appropriate. ट्रांजैक्शन वैल्यू में से कोई भी चीजें छुपानी नहीं चाहिए, सो दैट इज द एक्चुअल फेयर प्राइस दैट यू आर रिकवरिंग फ्रॉम द बायर, दैट इज व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू. नाउ व्हेन वी रेफर टू द सेकंड पोर्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए एक्सेप्ट होने के लिए देयर आर 4 कंडीशंस. दैट इज आई कैन से माय असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू ओनली इफ देयर इज अ सेल ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, then deliveries at the time and place of removal, price is the sole consideration for sale, and buyer and seller are not related person. ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं, then we'll say that assessable value is equal to transaction value and then valuation will be as per the transaction value only. However, if the conditions of this section 4(1)(a) are not getting satisfied, then the valuation is shifted to the central excise valuation rules. Now transaction value के बेसिस में there are certain inclusions and exclusions, जैसे पैकिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ये सब चीजें अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हो वो सब ट्रांजैक्शन वैल्यू में आता है. बट एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्रॉय, ये सब चीजें ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं आती है. जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये चैप्टर में पर्टिकुलरली, उसमें ध्यान देना दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डील करते वक्त यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. Include only those costs which form the part of value of goods. Do not include those costs which do not form the part of value of goods. So जैसे अगर आपको किसी ने बोला that मेरे पास ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकिंग है, तो वो पूरे ड्यूरेबल पैकिंग को अभी के कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड मत करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ड्यूरेबल पैकिंग का हम लोग सिर्फ अमोर्टाइज कॉस्ट लेते हैं बट एक्चुअल फुल वैल्यू नहीं. सो ऐसे वो जो हम लोग पर्टिकुलरली कैलकुलेशन करते हैं तब ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ एक्साइज में जो आएगा, that will be purely those factors which are there as a part of cost जो transaction value से relate करता है and जो place of removal के पहले incur किया गया रहेगा. Generally place of removal के बाद आने वाला कोई भी value ये अपने value of goods में आता नहीं है, that will not be included in the part of our value of goods. Now when we shift to the valuation when you are particularly discussing this transaction value, उसके ऊपर के numerical questions, I'll suggest that practice manual में से एंड मॉड्यूल में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देखकर जाना, बिकॉज these numerical questions will be definitely giving you a guidance as to how to solve these questions, practical type of questions. That is what you need to understand. Now the MRP based valuation is what it is pretty simple. It says that okay, you need to declare an MRP first. तो MRP के goods के बारे में there is a abatement. Abatement means reduction in value that is given for the purpose of calculating duty.
सो ये अबेटमेंट्स कैलकुलेट कंसिडर करने के बाद हम लोग बचे हुए अमाउंट के ऊपर ड्यूटी चार्ज करेंगे. मतलब इट विल बी लाइक द एमआरपी दैट इज गिवन माइनस द अबेटमेंट. So what we get is the abated value of MRP. On that abated MRP value, duty has to be paid in that case of MRP based valuation. Correct? Now MRP based valuation के लिए वो जो conditions थी that the goods should be mentioned under the Legal Metrology Act 2009, then earlier जिसका नाम Standard Weights and Measurement Act हुआ करता था, अभी वो Legal Metrology Act 2009 में cover होता है. Those goods are notified by the CBC for the purpose of this calculation of MRP basis prices. So that is one thing. अभी MRP वाले प्रोविजंस पढ़ते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो. इट इज नॉट दैट वन गुड्स और टाइप ऑफ गुड्स इज समथिंग व्हिच इज लायबल फॉर MRP. मतलब MRP बेस्ड वैल्यूएशन ये इस चीज पे तय नहीं होगा कि ओके ऑन दिस पर्टिकुलर कप ऑफ आइसक्रीम देयर विल बी MRP एंड देयर विल बी MRP फॉर ऑल द आइसक्रीम्स मेड. द आंसर इज नो. अगर मैं आइसक्रीम बना के रिटेल कप्स में बेचता हूँ तो उसके ऊपर वैल्यूएशन होगा MRP बेस्ड वैल्यूएशन. बट अगर वही आइसक्रीम मैं बल्क में बेचना चाहता हूँ, होटल्स को सप्लाई करना चाहता हूँ, शादियों में सप्लाई करना चाहता हूँ, तो वहां पे मैं जो आइसक्रीम बना के बाहर निकालूंगा दैट विल बी अ होलसेल टाइप ऑफ अ पैकेट विद नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी विच इज देयर एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम. मतलब MRP बेस्ड वैल्यूएशन में सिर्फ वही गुड्स आएंगे जो MRP बेस्ड वैल्यूएशन के लिए एलिजिबल है. दैट इज दे आर मेंशन्ड इन द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एज वेल एज द बोर्ड हैज नोटिफाइड. बट अगर वही गुड्स आप नॉर्मल तरीके से बेचते हो तो जैसे नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू ढूंढते हो वैसे ही वैल्यू ढूंढ के आपको उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करना है. नाउ सो ये तो हो गया अबाउट द वैल्यूएशन पार्ट. नाउ as I told you, please refer to the questions which are given in the practice manual. They are very very important for you. So questions को miss out मत करना. All the solved illustrations from the module have to be done by you before going for the examination. एंड द लास्ट पोर्शन अंडर सेंट्रल एक्साइज दैट इज SSI. SSI में सिर्फ क्या है, ऐसी वेरी वेरी सिंपल थिंग. दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आइदर एलिजिबिलिटी या फिर ड्यूटी कैलकुलेशन. हालांकि तुम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन SSI है ही नहीं. सो ओनली व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट ओके हु इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग एन SSI. सो हम लोग ने देखा था दैट SSI बेनिफिट क्लेम करने के लिए if the turnover in the immediately preceding year does not exceed rupees 400 lakhs, 400 lakhs से ज्यादा नहीं है, मतलब 400 एंड उससे कम अगर रहेगा इन द प्रीवियस ईयर टर्नओवर, देन वील से ओके इन द करंट ईयर यू आर एलिजिबल SSI यूनिट. बट इन द करंट आई मीन व्हेन वी आर चेकिंग दिस एलिजिबिलिटी, लेट्स से दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज SSI यूनिट, देन आप इस साल में SSI यूनिट नहीं बन सकोगे. नाउ SSI वालों को बेसिक फायदा क्या है, up to 1.5 crore rupees if you are eligible SSI unit, let's say for the current year, up to 1.5 crores rupees of turnover, you will not be liable to pay any excise duty. That is the benefit which is available to these people under the SSI. So SSI में दूसरा क्या आता है कि एक तो ड्यूटी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, या फिर बोलेंगे दैट आप SSI के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करो. बेसिक व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट SSI में एलिजिबिलिटी मिलने के लिए दैट लास्ट ईयर्स टर्नओवर शुड नॉट हैव एक्सीडेड 400 lakhs, that is 4 crore rupees. Then in the current year I'll be a eligible SSI unit. Now SSI का एग्जाम्पशन ये कंपलसरी नहीं है. अगर कोई चाहता है कि डे वन से ही उसको छुट्टी चाहिए, कोई भी उसको मतलब he is willing that day one से ही उसको छुट्टी चाहिए, from what purpose, that he says that I want to pay duty from the very first day, I do not wish to really वेट कि मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस होगा देन आई स्टार्ट पेइंग द ड्यूटी, ये नहीं चाहिए. सो ऐसे टाइम पे वन पर्सन में थिंक दैट ओके आई डोंट वांट टू हैव SSI, मुझे उससे छुटकारा दे दो, आई विल बी पेइंग लाइक अ टैक्स लाइक अ नॉर्मल मैन्युफैक्चरर. And then that's it. So basically over here we'll say that okay there are certain conditions given in SSI that watches, matches, ये सब goods के ऊपर SSI का exemption नहीं मिलता है and all. So that is all given to you over there. So my dear friends, by this I would complete your revision of excise. Amendments in excise जो थे वो ऐसा था कि rate of excise duty 12 से बढ़ के 12.5% हो गया. बाकी notable amendment as such is one thing in the registration process that पहले जो 7 days लगता था अभी वो 2 days पे आ गया है. डिजिटली साइंड इनवॉइसेस अभी चलते हैं, उसका फिजिकल कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब डिजिटली साइंड इनवॉइस भी दिया रहेगा तो दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन ऑथेंटिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ aspect that we need to remember. So my dear friends, by this I would like to conclude my first video on Central Excise Act. Followed by this we'll be covering the customs law and VAT law in one video and then service tax in the third one. So I'll take your leave for the time being and wish you all the best. Thank you. Bye bye.